Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 4th of March. The first topic is the Ministry of Defense has given note for the defense acquisition procedure. Second, YouTube creators' contribution to economy. Will see how this sector is also contributing substantially to the Indian economy. Third, high debt toll among unvaccinated. This is an official statement directly coming from the ICMR. Second last, trade deficit seen heights to widen the gap, that is current account deficit. And the last is an editorial from Indian Express that the only fuel, right? So we'll understand the alternative way how the Ujjwala scheme has been so far achievable in terms of the people who is actually getting the benefit out of it. We'll understand all the consequences, positive side and negative side of this. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press the like button. And we have prelims test series for you. Total 60 tests would be there along with free subscription of IS Gazetted magazine, right, that you can avail with this course. For more details, you can refer to the description section of this video where I provided a dedicated link to buy this course. Do check it out. The first news of the day, that is not for defense acquisition procedures. The Ministry of Defense has finally come up with the guideline. This particular news is important for General Studies paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it. So let's understand this. रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कुछ ऑफर्स की है 4 प्रोजेक्ट्स को दैट इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. So this is a kind of public-private partnership, a sort of this agreement only that will call for a lot more advancement both to the Indian Army as well as Indian Air Force. तो 4 जो projects हैं, this 4 project to the Indian industries for design and development would be under the Make One categories of Defense Acquisition Program 2020. जो DAPA की जो procedures रखी गई थी Defense Acquisition Procedures की, उसके accordingly ही सारी चीज़ों को execute करनी जा रही है. And even it will also call for the government initiatives of Atmanirbhar Bharat in the domestic manufacturing as well as जो manufacturing है हमारे defense sector में उसको भी promote करने के लिए. Now, the industry will provide a financial support to the prototype that is developed with this project, right? So again, the government wanted to incorporate the state-of-art technology in our armed forces as well as in the air forces. Now, कौन-कौन से projects हैं जो government ने approve किए हैं? So the list of project which has been given approval in principle, जिसको AIP भी कहते हैं short में, is by the Committee of Ministry of Defense. So these are the 4 approval that was given. First, to the Indian Air Force for communication equipments and Indian security protocols जो include करेंगी routers, switches, encryptors, VoIP phones and their software. Now the second is Indian Air Force जहाँ पे airborne electro-optical pods होंगे and ground-based system would be developed. Now again for Air Force would be airborne standoff jammers, and for Indian Army there would be Indian light tank. So these are some of the approved in principle project that was recently approved by the Ministry of Defense. Now this is for the first time, this has to be noted, ये पहली बार है since the launch of Defense Acquisition Procedure 2020 कि किसी Indian industry has been involved in the development of big ticket platform like light tanks, communications equipment with the Indian security protocol. So again, very important factor. As we have seen that government की जो inclination है modernization की तरफ, जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, even for some sector PLI scheme was also introduced, but specifically talking about the defense sector, this is for the first time जब ये defense acquisition procedures के through Indian industries को भी incorporate किया गया. Now industries funded Make 2 procedures, जो मैंने पहले बात की वो Make 1 की थी. Make 2 procedures में again Indian Air Force will have full motion stimulator for Apache helicopter. Now second for Indian Air Force again full burst simulator for Chinook helicopter. फिर उसके बाद वेरिएबल रोबोटिक्स इक्विपमेंट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस. और इंडियन आर्मी के 2 प्रोजेक्ट्स हैं. द फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड फोर्स और उसके अलावा ऑटोनोमस कॉम्बैक्ट व्हीकल होंगे. सो दीज वुड बी द पार्ट ऑफ मेक 2 प्रोसीजर्स
of the basically the assignment that has been given to the industries aligned. Now, ये मेक टू प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, मेक टू कैटेगरीज क्या इनकॉर्पोरेट करती हैं. सो दिस इज अ प्रोटोटाइप फॉर द डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट ऑफ सिस्टम प्लेटफॉर्म एंड देयर अपग्रेड्स ऑन द सब टाइप्स, चाहे वो असेंबलीज हो, कंपोनेंट्स हो, प्राइमरी import items हो, substitutions हो, innovation solutions हो, which no government funding would be provided for the prototype development as purposes. So again, an important point they can ask you in prelims कि यहाँ पे government aiding है या funding है कि नहीं. So for which no government supplies is going to be provided for the prototype development, right? Now, YouTube creators' contributions to economy. This particular news is important for General Studies Paper 3, Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. And even it can be a part of your General Studies Paper 4 in case studies, right? तो आपसे कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं. ये एक important aspect है जिसपे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं है. But again, a YouTube creator is definitely contributing in our economy. So this was a research, that was a study that was conducted by the Oxford Economics. सो जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की, इन्होंने कहा है कि जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं दे हैव कंट्रीब्यूटेड अराउंड 6800 करोड़ रुपीस 6800 करोड़ रुपीस टू इंडियन जीडीपी, राइट? दिस इज अ कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द यूट्यूब, right? And the creator is playing a significant role in this. So the study was based on the survey of 2021, which more than 6,000 Indian user and businessmen were there. ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की, दिस हैज ऑल्सो जनरेटेड मोर देन 6.83 लाख फुल इक्विवेलेंट जॉब इन इंडिया, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इंडिया इज फेसिंग द हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट. पिछले 45 सालों में ये पहली बार हुई है जब इतनी हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है. तो वहाँ पे कोई एक सेक्टर जब ऐसे कंट्रीब्यूट करी है, दिस शुड बी डेफिनेटली अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज नीदर अ फॉर्मल सेक्टर नॉर अ इनफॉर्मल सेक्टर, बट देयर कंट्रीब्यूशन इज सब्सटैंशियली हायर. Right? So YouTube has released a report titled A Platform for Indian Opportunity, assessing economy, societal, cultural and impact on YouTube. So this is how the report was released, asking the assessment of economical, societal, cultural and impact on the YouTube as well. Now let's understand the creator economy, how the YouTube creator is impacting our economy, benefiting our economy. So it can be considered as a potential that emerge as a soft power which is acting for the economical growth, job creation and even for the cultural influences. Because if you see YouTube content creators, there are a lot more content creators which is given an insight, which is given even some insight about different sector, different philosophy and different domain of a society. Even we are also contributing as a YouTube content creator. So the number of channel in India having more than 1 lakh subscriber is now 40,000, marking the exercise of 45% a year-on-year basis. And more creator were funding audience on the YouTube, right? So this is a potential of a YouTube channel that it can have a societal impact, right? Now today the number of channel has earning at least 1 lakh in revenues, that has increased 60% on year-on-year basis. Now this continues to motivate creators, think viewers from all background and all geographies, right? So we also appreciate your efforts to be the part of our audience. Those of you who have still not subscribed our channel, do subscribe it. Now revenues paid by the YouTube, किस तरह से ये पेड की जाती है, जितने भी एड्स होते हैं, म्यूजिक और जो लॉयल्टी पेमेंट्स होती है उनके थ्रू क्रिएटर्स को दी जाती हैं. एंड इवन डायरेक्ट इम्पैक्ट इज देयर ऑन द इंडियन कंटेंट क्रिएटर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लो डायग्राम चार्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. उसके बाद इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें सप्लाई चेन में, जो साउंड, म्यूजिक, इक्विपमेंट्स, एडिटिंग, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो परचेजिंग है वो इकोनॉमी में ही नोट की जाती है. इंड्यूस इम्पैक्ट ऑन इंडियन कंज्यूमर बिजनेस लाइक food, drink, recreation, leisure, household goods, consumer behavior and supply chain is a part of the entire ecosystem, right? तो अगर बात करें टोटल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की, ऑलमोस्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग 6,800 करोड़ रुपीस टू द जीडीपी, एंड इट इज लाइक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट equivalent to full-time employment to almost 6,83,900 content creator, which is a big number coming from a country like India. Now, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, जो रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी रूल्स लाई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रूल्स थी, इन द नियर इट कॉल फॉर लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म विद 5 मिलियन यूजर्स टू पब्लिश देयर पीरियोडिक कंप्लाइंसेस. उनको पब्लिश करनी होती है हर महीने, जहाँ पे उसकी जो डिटेल है वो मेंशंस होगी, कंप्लीट कितने रिसीव्स हुए हैं और कितने कंप्लेन के एक्शंस लिए गए हैं. And this particular thing is with regards to social media operating in India as well, right?
तो एक एस्टिमेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट ईयर आई थी, उसमें कंट्री है ऑलमोस्ट 44.8 करोड़ यूट्यूबर्स, 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स, 41 करोड़ फेसबुक यूजर, 21 करोड़ इंस्टाग्राम, and 1.7 crore users are there in Twitter. So this is the exact segregations of the social media that is operating in India. Now, the other news, that is high death toll among unvaccinated. Important point to note, because most of the people were still reluctant to take their vaccine. So एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है आईसीएमआर की तरफ से कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी, जो डेथ रिपोर्ट की है उसमें वैसे लोग थे जिन्होंने मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए थे. So this news is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. So addressing the weekly health bulletin, or you can say the press conference, जो ICMR के chief है Mr. Bhargav, he has said that 92% of the people who have died in the COVID has not received the COVID-19 vaccine. This is what an astonishing fact coming officially from the ICMR chief. तो जितने लोगों की डेथ हुई है उसमें 92% लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए हुए थे, right? And he said that it was evident that the vaccine and the wide vaccination coverage has played an important role in protecting the life of hundreds of the people, right? So make sure you and your loved one have taken vaccine. If you know someone who have still not taken vaccine, please assist them, ask them so that they could also get vaccinated. Now, present situations की अगर बात करें, according to the health ministry, India is currently in a better stage compared to many other countries. यहाँ पे जो average cases report हो रही हैं at present is 11,302. और इसी टाइम पे अगर मैं बात करूं जब पीक चल रही थी इंडिया में, so almost 4.5 lakh of the cases were reported every day. So India contribute only 0.7% to the global cases at present. और सिंगल स्टेट्स की अगर बात करें जहाँ पे एक्टिव केसेस हैं, तो कुछ स्टेट्स में 10,000 के भी आसपास केसेस हैं, कुछ स्टेट्स में वेरी कर रहे हैं 5,000 to 10,000, राइट? एंड दिस इज द एवरेज नंबर. Now, remaining state with less than 5,000 cases include Kerala, Maharashtra, Mizoram, or 50% of the active cases from our country. So, ये 3 states ऐसे हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा भी cases report किए गए. A continuous decrease in the cases across the world has been recognized, and India reported a sharp decline of almost 96.4% against the world average of 55.7%. So, a good number, although vaccination India में एक सही pace पे है, but definitely some of the things also need to be improved. So if you look into the India's vaccination equation, how does it work? So India is facing a large vaccination shortfall. So this is a critical analysis of the present ongoing vaccination process. So almost 76% of the adult is vaccinated till date, right? और government की जो target थी, that was to cover almost 100% adult to be vaccinated by 31st of December 2021, which has not happened, right? तो actually जो 62% adult हैं, that is vaccinated by the target date, और अभी भी जो shortfall है वो 38% के आसपास है, right? So it is expected now, अब next course of action क्या होंगी, क्या date anticipated है अगर इंडिया को 100% vaccination करनी है, so it would take June 1st, 2022. So this is what the anticipation calculation goes like, and vaccine behind schedule is like 5 month 1 day late चल रही है anticipation date से. Today's vaccination till like अब January 22 की बात करें 1.2 के आसपास है. Average daily vaccination 30 days is 5.2 million per day. So this is how things goes, and definitely we can understand the part that government is making their severe effort, but we have to also ensure जो reluctancy है वैक्सीन को लेकर के वो हटे, और लोगों के बीच में जो गलत धारणा है, the false impression with regard to the vaccine has to be waved off, और लोगों को जाने की जरूरत है. And even some states has also started in-house vaccination, so they should avail their facility. Awareness is something which is playing a very critical role in this. Now, trade deficit seen high to within the CAD. This particular news is important for General Studies Paper 3, Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization, Resource Growth and Development. So, as per the Nomura report, India की जो trade deficit है, which has shot back to around 21.2 billion in February, is expected to elevate in the coming month. This is what the Nomura has to say. Nomura क्या है? Nomura एक जापानीज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है जो कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज देती है ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में, राइट? So they have given their assessment. The current account deficit could widen up to 2.6% of the GDP in 2022 and 23, and this year it is expected around 1.7%.
This is what the Numera report, the analysis from Numera coming. Now, surge in the crude oil prices is very significant at this point of time amid the CAD and inflation that is arising in India. तो ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें इन द डोमेस्टिक मार्केट हैज सिग्निफिकेंट डिमांड और इंडिया के जो इंपोर्ट बिल है वो इस वजह से बढ़ी है इवन इफ द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इज गोइंग हायर इंडिया कैन विटनेस द करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज वी आर पेइंग इन द फॉरेन कंट्रीज जो डॉलर्स में पे करते हैं इस वजह से सीएडी यहाँ पे देखी जा सकती है द सिचुएशन इज स्पेशली एग्रेवेटेड बाय द ऑनगोइंग रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दैट वी हैव सीन इन द रिसेंट टाइम और इवन जो क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ी है मैं आपके साथ प्राइस भी डिस्कस करूंगा कितनी प्राइजेस आगे आई हैं Now, it is also anticipated that the gold import that will remain high as investor taking hedge against the market volatility and inflation. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं और वो गोल्ड ऑप्शन है. Now, risk to current account deficit, how this can happen? Because जो current account deficit है, it is expected to widen to 2.6% and it is anticipated 1.7% of the previous one. अभी assume अगर की जाए कि average क्रूड ऑयल बैरल में अगर देखें तो 86.6 होनी चाहिए बट इन द रीसेंट टाइम जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करती है दैट हैज टच्ड अप टू 120 बैरल so definitely this is something which is going to peak inflation in India as well and if the price maintain at the current level then the risks are going to be steeper towards much wider deficit सो ना अगर बात करें इंडिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जल्दी ही इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है इवन यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई है जिसमें 141 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है कि रसिया को जल्द से जल्द अपने वॉर बंद करना चाहिए जो यूक्रेन को इन्वेड करनी चाहती है सो 141 कंट्री हैज़ फेवर दैट वॉट एवर डिसीजन दैट रसिया इज टेकिंग इज रॉन्ग तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो प्राइस स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे कंट्रीज को इम्पैक्ट कर सकती हैं स्पेशली ऐसी कंट्रीज जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं Now, budget estimations जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है फॉर बजट लाइक फॉर दिस करंट ईयर एज्यूम द एवरेज ऑयल टू बी अराउंड 75 जो डॉलर है पर बैरल की एंटिसिपेशन की गई है बट व्हाट इज द प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज 120 बैरल पर डॉलर व्हिच इज प्रीटी हायर देन द एंटिसिपेटेड राइट तो ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली होगी 17.9 बिलियन इन जनवरी एंड इट कैन हेड अ रिकॉर्ड ऑफ 22.9 इन नवंबर जो हुई थी और इससे पहले सितंबर में 21.7 थी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ऑल्सो थिंग्स वर नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन So 10% rise in the global oil prices would widen the India's current account deficit by 0.3% of our GDP, that is gross domestic produce. Now India's export की अगर बात करें Russia account for 0.8% of India's export but जो risk है export demand की that will increase and if it slows down Russia economy has a ripple effect. Definitely उसके जो repercussion है Russian economy में भी दिखेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आयरन स्टील मैरीन जो प्रोडक्ट्स हैं दैट कंप्राइज बल्क ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट रीजन सो अगेन एक्सपोर्ट पार्ट इज समथिंग विच शुड बी ऑल्सो लुकन वेरी सीरियसली Now the editorial part, that is the only fuel. This particular editorial is important for general studies paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center and the state. And this can be important for the other topic in same paper, that is government policies and intervention for the development of various sector. So let's understand what the editor want to convey in this editorial. So I've segregated this editorial into 6 important subheads. First is the background. Second, challenges with the electricity as an alternative. Underperforming biogas program जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है. Alternative to LPG fuels, उज्ज्वला स्कीम्स की क्या फेल्योर है, क्या सक्सेस रेट है, and even the way forward. The entire editorial focuses upon the domestic LPG prices, क्या क्या सब्सिडीज हैं जो एक्चुअल में काम की हैं और क्या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हो सकते हैं LPG को लेकर के. So let's understand this editorial in detail. तो अगर बैकग्राउंड की अगर बात करें जिस तरह से यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस ऑफ एलपीजी कनेक्शंस की बात की जाए इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 6 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन इंडियन किचन गवर्नमेंट एक तरफ तो बात कर रही है कि एलपीजी की कनेक्शंस को बढ़ाने की जरूरत है दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटी है जो डेटा है गवर्नमेंट की उसमें 6 लाख लोगों की डेथ रिपोर्ट हो रही है ड्यू टू air pollution, especially the air pollution that is coming out of the kitchen because of the burning of the wood and other stuffs, right? So government has spent more than 12,000 crore rupees for the universal access to LPG connection. बहुत सारे ऐसे programs भी लाए गए, but ground reality ये है कि अभी भी लोगों की death हो रही है.
Now, half of the rural India continues to primarily rely on the burning of the solid fuels for cooking. और जो livelihood के problems है वो भी बढ़ रहे हैं, like illness which include heart diseases, cataract and lung cancer. So if definitely they are burning some solid fuel, उसके repercussion हमारे body में होंगे, उसके negative consequences individual के body पे ही होंगे. Now, the recent evidence show that it has increased the risk of COVID-19 infection as well. Now, rising domestic prices, जिस तरह से LPG के connections में even the subsidies that was provided by the government has been removed. So, removal of subsidies, growing retail inflations, and unintended distress has led to the which has led to the pandemic. उसके वजह से भी जो लो और मिडिल इनकम की क्लास के लोग हैं उनकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुई है एंड इवन दे कैन नॉट शिफ्ट टू द LPG कनेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट इज़ like somewhere close to 900 to 1000 rupees in many states, right? तो इतनी prices afford करना एक normal low और middle class families के लिए काफ़ी tough है and the connection are not enough to address the challenges and sustain would जहाँ पे investment की ज़रूरत है ऐसी स्टेट हो जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, बिहेवियर चेंज हो और क्वालिटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए. सो गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड अ सब्सिडी इफ एनी इनोवेशन और प्राइवेट कोलैबोरेशन इज देयर. दे नीड टू इंश्योर कि इस तरह की पॉलिसीज हो जो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, एक वो रिफिल करवा सके अपने सिलेंडर्स को एंड इवन दे कुड शिफ्ट टू द LPG कनेक्शन एज वेल. नाउ चैलेंजेस विद द इलेक्ट्रिसिटी एज एन अल्टरनेटिव. यहाँ पे एक बताई गई है कि क्या LPG के अलावे जो दूसरे अल्टरनेटिव है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, बट इसके अपने चैलेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेज है. लेट अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव इन इंडिया, राइट. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं लाइक इंडक्शन स्टोव्स जो हैं फ्लेमलेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, उसको भी यूज किया जा सकता है विच कैन एड्रेस सम कल्चरल एंड बिहेवियर बैरियर्स. किस तरह से इसमें प्रॉब्लम है, लेट अंडरस्टैंड व्हाई the rural India cannot go for this induction stoves. So electricity may not be immediately viable alternative because electricity connections जो है, जो rural electrifications की बात की जाए इंडिया में, that is very low and even जो maximum load है हर एक household में वो 500 watt की है. But if you talk about the induction which is sold in market, उसकी क्या रेटिंग है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, वो 1500 watt लेती है. So you can see the mismatch of 1100 watt which is there, which is impossible for them to get it, right. Further it could stress the electricity distribution system. जो वहाँ पे EDS है उस पे लोड पड़ेगी बिकॉज सारे लोग एक ही टाइम पे अपने अपने जो गैस इंडक्शन है उसको यूज करेंगे, तो एक लोड पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्कॉम्स पे, जिसके रिपरकशन अलग से ही हो सकते हैं. So large investment in distribution is required to augment it. In this, the public-private partnership can be a game changer. Along with the efforts that required the peak load management needed before the electricity can become a technical and viable option, especially in the rural India. I'm not talking about the urban areas. We are more focused and concerned with regards to the rural population of our country. Now, अंडर परफॉर्मेंट बायोगैसेस प्रोग्राम की अगर बात करें, गवर्नमेंट ने कुछ 30 साल पहले ये प्रोग्राम लाई थी बायोगैस यूजेस के लिए, विच हैज नॉट पिक्ड अप एंड इवन इट इज अनलाइकली टू पिक अप, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर भी इस पे कम की है, जहाँ पे पहले 137 करोड़ रुपीस दी गई थी फॉर द ईयर 2009 and 10. नाउ इट इज ओनली 36,000 करोड़ रुपीस. सो यू कैन सी द डाउनफॉल and the negative consequences with regard to the biogas program, because government ही इसको promote नहीं कर रही है, then how people is going to use that. Although the biogas may remain active in pockets, and it is hard that it is a dominated alternative for the LPG. Although electricity एक बार को alternative हो सकती है, but biogas program in India cannot be substitute for the LPG connections. Now, तो फिर क्या alternative बचे हैं LPG के लिए? Definitely one option is piped natural gas. That could be an alternative to the LPG. जो densely populated urban areas हैं, if you are living in any of the metropolitan cities, you must have a pipeline connection, right? जो कि थोड़ी cost effective भी है और लोगों को आराम से मिल जाती है. Now, this is not designated to supply the cooking needs of the rural India. और एक network expansion हो सकती है, that could be excessive. Now, even if this is addressed, India has a limited reserves of natural gases. Therefore, जो large scale uses of PNG हैं, that could remain required the import, which would make the PNG unaffordable as well. So we have to understand the cost effectiveness of any program coming, because rural India में
कॉस्ट इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम है, जो पुअर और मार्जिनाइज लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, दे वांट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ फ्यूल दैट यूर यूजिंग। द रीजन बीइंग वो एलपीजी के वापस जाकर के वुड और कोल इस तरह के अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जाते हैं जो कि काफ़ी चीप है और उनके लिए अफोर्डेबल। Now, Ujjwala schemes की अगर बात करें, this was launched way back in 2016 and there have been significant effort जहाँ पे गवर्नमेंट ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की गई है और अलग से बॉटलिंग प्लांट्स लगाए गए हैं ऑलमोस्ट 6,200,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के साथ एंड 9,000 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वर ऑल्सो एडेड, बट जो रिजल्ट आनी चाहिए वो इससे नहीं आई है। हाउएवर बजटरी एलोकेशंस की अगर बात करें वो भी सिग्निफिकेंटली डिप हुई है इसमें। Earlier, it was 31,400 crore rupees for 2018 and 19, and for this current year budget, it is only limited to 4,000 crore rupees. You can see the allocation has drastically reduced, and even the LPG affordability is an issue for the measure of the population in our country. As I've told you, price is getting higher. In some state, it is close to 9,000 and 900 and 1,000 रुपीज़ बैंड। अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे 900 से लेकर के 1,000 रुपीज़ तक एलपीजी कनेक्शन मिल रही है, एलपीजी के रिफिल सिलेंडर्स मिल रहे हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफिलिंग ऑफ द सिलेंडर्स, सो विच इज ऑन द हायर साइड एंड पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, एक जिस तरह से सब्सिडी की बात की जाए, दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। हिस्टोरिकली इसके अगर नहीं की जाती है तो कंजम्पशन हमेशा ही लो की तरफ रहेगी। अनदर वे टू अचीव इज टू रिज्यूम द एलपीजी सब्सिडीज एंड रैशनलाइज देम। अगर प्राइस भी है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे अफोर्डेबल प्राइस रखे जो कि सबके लिए सस्टेनेबल हो। इन एडिशन, जो रिवाइजिंग एलपीजी प्राइस है दैट इज लिमिटेड टू ट्वाइस अ ईयर, which can certainly be context with a volatile market, तो गवर्नमेंट अगर जरूरत पड़े तो और नंबर ऑफ टाइम्स को रिवाइज भी कर सकती है। Now, with efforts to enhance the alternative, this can happen in parallel, and government also need to formulate a policy where they should incorporate that more number of people and beneficiaries should be the part of LPG connection. And government can also impact the meaningful development of the issues associated with the household population. So by this means LPG के जो कनेक्शंस हैं या PNG के जो कनेक्शंस हैं उसके थ्रू ही जो एयर पॉल्यूशन की डेथ है जो इंडिया में ऑलमोस्ट 6 लाख तक रिपोर्ट की जा रही है वो कम की जा सकती है। So this is how the way forward can be concluded. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday's question. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is again C. Today's MCQ for practice. पहला मालाबार एक्सरसाइज से लेकर के, it is a talent and lever exercise between the navies of India, Japan and USA. It is held alternatively in India and Pacific Ocean. So do check it out. Which among the following is the correct option? And if you want to change the pattern of the question that we are asking, you can let us know that किस तरह के आपके questions चाहिए होंगे। Now, Gender Inequality Index is released by World Economic Forum, UNDP, Save the Children, and Transparency International, right? So these are some of the important questions from index and report that is frequently asked in the UPSC examination, right? So this was all about the daily news and editorial analysis of the day. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.